Everyone. On behalf of Parul University, I welcome you all. Myself, Lohar Vinayak, Assistant Professor of EC Department in Parul Institute of Engineering and Technology. Uh, for today's session, we have honored to with us Mr. Hitesh Patil, Product Engineer at Precision Nolan in India Private Limited. He have 5 years of experience of industrial experience and where you have good command in automation and service and sales. Okay. Once again, I welcome you, sir. Thank you. You can see my screen, sir. Yeah, yeah. Okay, okay. Please share your presentation. Yes. Okay, 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 okay. Okay. So hello everyone. My name is Hitesh Patil. Currently, I am working in Prisha Mall in India as a product engineer. I was passed out from Parul Institute on 2015, and it was a great experience there from 2011 to 2015. I like to thank you all of you for joining us for today's webinar. It is based on different types of load cells and basics of automation. So friends, you all are using load cells in your daily life, but you don't know where is it and how it works. So today we will understand where we are using load cells, how it works, and what are different types of load cells, and in industries how we are using load cells for different applications. Also we will take a look of automation. So nowadays we are using automation in every sector for home automation, for building automation, for light automation, for industrial automation. We are supplying our weighing machines in industries. So I will take a look of industry automation to you, and also discuss about basics of automation. So these are our topics: load cells in our daily life, load cells in weighing industries, load cells in all industries like FMCG, food, chemicals, pharma, power plants, etc. So after that, we have understand about what is a load cell and where it is used. So then we will take a look on what is load cell and what principle we are using in load cell. After that, we will look different types of load cells. Uh, 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 by use of load cells, we can communicate with indicator and show our weight on displays. After that, we will look basics of automation, advantages of automation, weighing scales in automation. So, friends, we are using automation in our daily lives. Okay, for gyms, hospital, in railway stations, we had check our body weights. Okay, on a railway station, we had seen that if you are putting 1 rupees coin and the ticket will generate with your weight. Okay. Also, we had using it in our kitchens, not in our kitchens. Master chefs are using it in kitchen. This is weighing balance, which are using in kitchen. This is the weigh balance for body weight checking. Okay. In grocery shop, in vegetable shops, also we had seen this. Also, we had seen in DMart and malls. So, आप जो इंग्रेडिएंट्स वहां से लेते हो पॉलीथीन में उसका वेट होता है, राइट? और उसके बाद उसका टिकट प्रिंट होता है जिसमें वेट और एमआरपी दोनों प्रिंट होके आता है और वो स्टिक हो जाता है.
सो हमें कभी पता नहीं था कि उसमें क्या होता है ऐसे कि जिससे वो वेट उसमें डिस्प्ले करता है. ओके, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. In jeweler shop also you will look this type of weighing balances. Okay, so this is a weighing balance we are using in jewelry shop. So इसमें कांच का केज क्यों लगाया हुआ होता है? क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज होता है. सो हमारा जो ब्रीथिंग होता है उससे भी उसमें एरर जनरेट हो सकता है. सो इसीलिए उसमें कांच के केज में जो वेइंग पैन है वो रखते हैं. Also we are using a crane type load cells. So इसमें यहाँ से हम हैंग कर देते हैं जो बैलेंस है उसको, और यहाँ पे कोई भी वेट जो हमें वे करना है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं हम. ओके, सो ये बात हो गई हमारी डेली लाइफ में जो यूज करते हैं हम लोड सेल्स उसका. सो मैं प्रिशा मुलन में हूँ, और वी आर working on load cells and indicators for many type of applications like platform scales, laboratory scales, moisture analyzers, crane scales, tank weighing systems, backfilling systems, check weighing systems, belt weighing system, weigh bridges, and drum filling systems. Okay, for every system, there are different type of load cells, and for that we are using a different capacity of load cells. So now understand one by one that all these systems. So these all are our platform scales. This is a low profile platform scale. It is using for drum filling and backfilling system. So what happened? Jumbo bags are putting on pallets, and the pallet is simply lifted on this by pallet crane. So this is a U-type platform scale. It is also for a pallet scale. These systems are using for a multi-drum system. So we can fill 4 drums at a time. Okay, in these two systems, we are using this type of load cell. This is called a SB14 load cell. So you are fixing this load cell on all 4 corners by these bolts, and then here we are using leg. So when you are putting weight on this weight scale, so here we are putting a strain gauge. So it is compressed or it will be in tension. So after that, it will generate electrical signals, and we can display the weight what we had put on this. Okay, this is a simple type of weighing balance. This is a ruler based weighing scale. So for a single type of drum filling system, we are using this. So आप जो खाली ड्रम जो यहाँ पे रखते हो आप मूव करवा सकते हो, बट जो भरा हुआ 200 केजी का ड्रम हो वो आप इजीली मूव नहीं करवा सकते. सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस रोलर्स. Okay, and in this system, we are using this type of load cell. It is PCB type load cell. So इसमें 2 फ्रेम्स होती है, एक ऊपर लगता है एक नीचे लगता है. ओके, सो ऊपर से हम जैसे वेट अप्लाई करते हैं और नीचे से ये फिक्स होता है हमारा जो फ्लोर है उस पे रहेगा. सो जैसे हम वेट अप्लाई करेंगे उस पे, सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसमें कन्वर्ट होके हमारा जो इंडिकेटर है उसमें शो करेगा. नाउ laboratory scales. These two are our laboratory scales which are using in many companies like pharma, then chemical laboratories. So they need digits in
milligram, and in milligram they need 4 to 5 digits. So these two are using for that. This is our moisture analyzer, which comes with halogen and infrared. It depends on the requirement of user, because halogen moisture analyzer are costlier than infrared. So it is depends on their budget. Uh, so moisture analyzer is basically determines its moisture ऑफ इट्स जो सब्सटेंस, उसमें जो हम सैंपल लेते हैं, सो उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर है और कितने ग्राम मॉइस्चर है, वो हम उसमें मेजर कर सकते हैं. सो वो थर्मोग्रेविमेट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है. सो at start of the measurement, the moisture analyzer determines the weight quickly heated by the integral halogen. Okay, the heating module and the moisture of that substances will vaporize, and we will quickly measure the its dryness. Okay, so once drying has been completed, the moisture or solid content of your sample is displayed on the screen, and this is the inner body of our lab scales. So it is working on electromagnetic force restoration principle. So this is its circuit. Now tank weighing systems. Tank weighing system, its name is determined. What is it? So टैंक में जो भी मटेरियल होता है वो हम वेट करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें वेट कितना है. सो टैंक का जो वेट है वो हम पहले तैयार कर देते हैं, उसके बाद उसमें जो मटेरियल्स आते हैं उसको हम देख सकते हैं. सो लाइक साइलोज में भी वैसे होता है. ये रिलायंस में हमने जो साइलो सप्लाई किया हुआ है उसका जो इमेज है ये. सो ये जो लग्स होता है, 4 लग का सिस्टम भी होता है, 3 लग का सिस्टम होता है. उसके नीचे हम ये लोड माउंट्स प्लेस करते हैं. सो लोड माउंट्स हैविंग जैक ऑल्सो. सो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये जैक अप होता है. व्हेन वेल्डिंग वर्क इज कंप्लीटेड, आफ्टर दैट we put this load cell in a load mount and connect all load cells to junction box, and junction box to one cable is going to our indicator, and we can weigh the material weights. So ये different types के application के लिए different load cells यूज होते हैं, वो आगे हम देखेंगे. सो ये जो है हमारा बैंडिंग बीम लोड सेल है, ये जो है हमारा सिंगल सैर बीम लोड सेल है, ये डबल एंडेड लोड सेल है. इसका कैपेसिटी आपका 20 टन टू 200 टन 20 kg, सॉरी 20 kg टू 200 kg तक होता है. ये हमारे 300 kg टू 5 टन तक हम यूज कर सकते हैं. ये जो होता है ये 10 टन से लेके 100 टन तक ये कैपेसिटी मेजर कर सकता है. सो ये रिएक्टर्स है, इसमें लाइंस वगैरह सब लगाया हुआ होता है. तो हमें एक्यूरेट वेट जो डिस्प्ले करवाना होता है, तो ये जो लाइंस है उसका इफेक्ट हमें नहीं आना चाहिए. सिर्फ जो टैंक है वो हमारा लोड सेल पे ही होना चाहिए. सो हम उसका एक्यूरेट वेट चेक कर सकते हैं. इसके लिए हम बेलोज और होजीज यूज करते हैं. सो दिस इज अवर टैंक वेइंग सिस्टम SCADA ड्राइंग फॉर बैचिंग एप्लीकेशन. सो बैचिंग बेसिकली यूजेस होता है फॉर मेकिंग बैचेस. सो आपने देखा होगा कि जो बिस्किट्स होते हैं या फिर आपका जो कुछ जो FMCG में आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनता है, तो वो एक ही टाइप के सब होते हैं. तो वो कैसे होता है?
वो क्योंकि पूरा ऑटोमेशन में सब वो बनता है। उसमें क्या होता है, इंडिकेटर में हम सेट पॉइंट सेट करते हैं, और उसमें जो इनपुट आउटपुट्स जो होते हैं तो वो हम यहाँ पे वाल पे दे देते हैं। तो लाइक एग्जांपल लेते हैं बिस्किट का। सो बिस्किट में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैदा होता है, घी होता है, पानी होता है। सो एक रेसिपी होता है कि आपको मैदा कितना लेना है, सो वो हम इंडिकेटर में सेट कर देते हैं। फिर शुगर आपको कितना लेना है वो इंडिकेटर में सेट कर देते हैं। उसके बाद पानी उसमें कितना जाना चाहिए वो इंडिकेटर में सेट कर देते हैं। एंड जैसे हम सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं, सो एक एक करके वो सीक्वेंस में आता है। जैसे इसमें 100 kg है तो 100 kg इसमें आएगा। जैसे 100 kg अचीव हो गया, सो ये वाल ऑफ हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। आफ्टर दैट शुगर के लिए वैसे है कि आपका शुगर लाइन में से आ रहा है, और जैसे उसका वेट अचीव होना है वो हो गया, उसके बाद ये वाल ऑफ हो जाएगा। उसके बाद वाटर हम लेंगे, सो वो उसका वे हो जाएगा। फिर यहाँ पे मोटर होता है, वो रिएक्टर आपका घूमता है, जितना आरपीएम पे उनका वीएफडी में सेट किया होता है वो आरपीएम पे वो घूमता है। उसके बाद उसमें टाइमिंग सेट किया होता है कि इतने टाइम के बाद वो रुक जाना चाहिए, और आउटलेट वाल जो है वो आपका ऑन हो जाना है। सो उसमें जितना भी मटेरियल है आपका वो सारा निकल के दूसरी लाइन में चला जाएगा। ओके। और वहां से फिर आपका जो आगे का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेशन में शुरू होगा। सो ये जो टैंक है उसमें हम बैचिंग यूज कर सकते हैं उसमें जो इनलेट और आउटलेट जो वाल्स है उसको ऑपरेट करने के लिए। ओके। So this is a backfilling system. This is for jumbo backfilling system, and this is for 20 kg to 50 kg backfilling system. This is our controller, and here we have given inputs and outputs feedbacks. So when we give start input from here, and we can also give start input from here. This is a foot switch. So when we give start input from here, this clamp will close, but it sends there is a bag is placed or not. If bag is not placed, then this will not operate. Okay. After that bag is packed, this will on. This is a screw conveyor, and in this sector gates are available. So they are working on coarse feed, fine feed, and super fine feeding for accurate weight. So same working in this. For this, we are using continuously also, and for dumps also. For dumps, we are dumping 50 kgs in 10 for 500 kg backfilling system. Okay. So like this, we can weigh. So now take a look of a video for better understanding. So he places a bag. Now bag weight is tagged by controller when he given start input. Now the weight is 0. Now material is continuously filling in this bag. Here set points are available. So it is for a 30 kg bag. So when 30 kg set point is over, it will automatically close. This close, and this is 30. Here gross weight is showing. Okay, this was the backfilling system. We had supplied it Gujarat tea. Okay, so this is a check weighing system. In this also we are using our load cell over here. So this is a inlet conveyor. This is a weighing conveyor.
and this is outlet conveyor. This is a different type of belt, and this is for roller skill. For carton box, we are using rollers, and at Parle, Khopoli, we had supplied like this. Okay, so when the packing is coming from inlet conveyor, it sends by these sensors and then comes on weighing balance. Here the weight is captured by the speed sensor and given output to here on indicator. And if the weight is within a range, like we had said that we need 1 kg package. So if 1 kg is achieved, then the it will here we can see green light. And if the weight is not achieved, then it will eject by this ejector cylinder, and the bag will go to here rejector conveyor. So like same here it is a inlet conveyor, this is a weighing conveyor, this is our outlet conveyor, and this is our rejector conveyor. So we can set what we want to weigh here. Okay. So for carton boxes, there are 20 kg carton boxes also. In Adani, 20 kgs we had supplied. So very small capacity load cells also placed in this weighing conveyor. So this is a load cell which we are using in this type of check weighing systems. So now belt weighing systems. Belt weighing systems are using in sugar factories, then power plants, also in chemical factories. For paper mills, also these belt weighing systems are using. So when we are taking the example of power plants, we are supplied at Vanagbori power plant. So when the call is going from here, okay, so continuously the belt is on, and here we are place our load cells. Okay, so the indicator is showing ton per hour weight. So आप जैसे कॉल ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बंकर में वो कितना केजी तक जा रहा है और कितना आप उसको बॉयलर में आप हीट करके वो स्टीम बना रहे हो. सो आपको वो सब आइडिया होना चाहिए कि कितना आपका एक दिन में कॉल ट्रांसफर हो रहा है और आपको कितना स्टॉक रखना पड़ेगा आगे. इसके लिए ये बेल्ट वेइंग सिस्टम यूज होता है. और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी लाइक कोई केमिकल है, पाउडर केमिकल, वो आपको ट्रांसफर करके कोई बंकर में थ्रो करना है तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो. सो दिस इज द फ्रेम. यहाँ पे लोड सेल लगता है 1 2 3 4, चारों का केबल यहाँ पे आता है. सो दिस इज आवर जंक्शन बॉक्स. फ्रॉम हियर वी आर टेकिंग वन केबल टू आवर इंडिकेटर, and in indicator we are giving power supply. So यहाँ पे जितना आपका वेट जाएगा तो कंटिन्यूअसली आपको टन पर आवर में दिखाएगा कि एक आवर में मेरा कितना टन मटेरियल ट्रांसफर हुआ है. Also load cells are using in weigh bridges. So this is a weigh bridge where we can weigh trucks. Okay, this is a drawing. So when truck is resting on this weigh bridge, so load cells are giving signals here,
This is nothing but a junction box. From here, we are taking one cable. After summing these four load cells signal, then it is going to indicator and display the weight. This is jumbo display. We can communicate from this indicator also by a 4 to 20 milliampere output. This is a CDL load cell. It is a digital type of load cell. So here we are applying weight, and in this strain gauge is available. So it is compressed or taking in tension. So after that it is generate electrical signals and giving to indicator. As we calibrate the weigh bridge or our platform scales, it is calibrate and show the weight what we had applied on this platform. So these are the drum filling systems. As I told, this is a U type of platform scale using for a multi drum filling system. So for foaming materials, we are using this type of pillar and lance. This is a long lance which is going to at bottom of our drum, and we can fill the material in steps. So some materials are foaming material, लाइक झाग जो निकलता है उससे आपका प्लेटफॉर्म और जो सिस्टम है वो आपका खराब हो सकता है और आपका मटेरियल भी वेस्ट होता है. सो उसके लिए हम ये यूज करते हैं. दिस इज अवर इंडिकेटर विच इज यूजिंग इन जोन 1 जोन 2 हैजार्डस एरिया, जहाँ पे एक चिंगारी से भी आग लग सकती है. वहां पे हम ऐसे सिस्टम्स EXD एनक्लोजर्स में प्रोवाइड करते हैं. सो ये फुल्ली आपका सेफ्टी के साथ होता है, जिसमें हम करंट आगे निकलने नहीं देते हैं. बैरियर्स वगैरह यूज होते हैं उसमें. This is our top filling system for single drum filling. So when we are putting one single drum here and giving start input, so the lance assembly will come down and our ball valve will on, and material will come and fill our drum as per set points. So after filling 200 kg, the lance will automatically take off, and we can draw our drums from this ramp. This is our tin filling system. So these are using in ink and paint industries for filling tins, drums, small drums, carboys. So in this also same operation is came here. Weighing balance is we can lift this. So we are not using rulers here. ओके, सेम ऑपरेशन इसमें भी होता है. जैसे आप स्टार्ट इनपुट देते हो, सो आपका जो लांस असेंबली है वो नीचे आएगा, आपका जो बॉल वाला है ये ऑन हो जाएगा. इट इज यूजिंग बाय सोलेनॉइड वाल्व, सो जिसमें हम एयर देते हैं, और जैसे आप ऑन कमांड देते हो, सो एयर आपका इसमें से पास होगा और आपका वाल्व ओपन कर देगा, और जैसे आप क्लोज कमांड दोगे तो वाल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और यहां से आपका मटेरियल आगे जा सकेगा. ओके, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग take a look of one video. It is fully automated. It is supplied to Novozymes Nashik. It is working on PLCs and controllers. These are our weighing controllers, and this is PLC panel. In this we are setting, calibrating, and
also checking the weights. When we place the drum, the sensor senses and giving its status to PLC. All drum status are going to PLC. This is our infeed conveyor where we are putting empty drums. This stopper are stopping and only one drum can go on labeling conveyor. After labeling the drum, it is going to filling cabin. And as we discussed earlier, the filling operation will take place here. So now stopper is on and our lance is dipping in our carboy. This is HMI where we can see net weight. This is capping machine which is automatically transfer all caps and senses all caps. This sensor also communicate with PLC. When the drum is coming here, sensor senses and the capping operation will be done. After capping, it will go into bunging tool. This bunging tool will tighten the cap. This is going to check weighing system. If the weight is not okay, then it will reject the drum. So manually, man will eject it. Now this is a counting. How many drums we had packed. This will count in this 84. This was outfit conveyor and only allow 4 drums at a time. After that, this door will be closed. This gravity conveyor, not powerized. In this motor is not placed. After filling, manually it will going in go down. Okay, so now we are aware of load cell and its working and how we can use it in many industries. Like we are using in all industries, FMCG, food, chemical, pharma, power plants, then paint industries, etc. So when we enter into the plant, from there to when we exit from plant, in all the machines we are using it. So from entrance we can use in weighing systems, in tank weighing system when we are taking chemicals. So there we can use for batching, we can use load cells. After that when the material is packing,
it is a powder filling system, then we are using bag filling system. If it is liquid, then we are using drum filling systems. So we had supplied in many well-known companies. So in FMCG, Hindustan Unilever, Colgate, Jyoti Labs, they are using our system. So in Hindustan Unilever, they are using for other beauty products, their surfactants for that. Also in Colgate, they are using in Jyoti Labs. So they are manufacturing Axo shop. So at there we had given many tank weighing systems in food plant, like Parle, Balaji Wafers, Amul, then Nestle, Adani. We had given systems in paint industry. There is Asian Paints, Narrow Leg, Berger Paints. We had supplied our systems in pharma, Lupin, Cipla, Zydus, PNG. PNG is like it is manufacturing Vicks products. Then chemicals. In chemicals, Pidilite, which is manufacturing adhesive chemicals. So at there also we had supplied our systems in Reliance, in Aditya Birla, in power plant at Vanagori also we had a supply our system. Okay, so now we are understanding what is load cell and where it is used. But in load cell, this is a banding type of load cell. So load cell is nothing but it is a transducer. As you know, transducer is converting one form of energy into another form of energy. So here we are applying force, that is in tension, compression, pressure, or torque, which compress here our strain gauges. Okay, so here our strain gauges are pasted. Okay, then it will produce electrical signal in millivolts, and these millivolt signals are going to indicate us, and we can see weights. So this is a drawing of our supplied platform scale. So this is the platform scale. In four corners, uh, we had placed load cells, and load cell cables are going to this JB. This is the junction box. Here, summing of load cell cables are done, and after that, one load cell cable is going to this indicator. So when we are giving 230 volt to indicator, the SMPS will convert it into 24 volt, and as our indicator is working on 24 volt, so after the power on, it will produce 5 volt, and giving to this load cell signals, and after that the 5 volt will transfer to this all four load cells. When you are putting some weight on this scale, then after compression and tension, weight the load cells will produce this electrical signal, and it will give to indicator. Okay, like this we can check the weights. So now we had seen load cells and how it works. Now, what is load cell? What principle based on it is working? So it is working on Wheatstone bridge principle. So we had studied it in 11th and 12th. So what is our Wheatstone bridge circuit? So in Wheatstone bridge circuit, there are four resistors. This is our output. This is our input. So
when we are giving input supply, it is from here, and when the load cell is sending the electrical signals, it is from here. Okay, so here we are using resistors like this. So this is called strain gauges. It is like plastic paper. Okay, so on that solder tabs are available, and their grids are pasted on there, and it all are pasted like this manner. Okay, so R1, R2, R3, R4. So when we are applying forces here, so R1 and R3 will compress, and R2 and R4 will be in tension. ओके, सो आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जैसे आपका रेजिस्टर चेंज होगा, उसका वैल्यू चेंज होगा, तो वैसे आपका जो इलेक्ट्रिकल जो आपका वोल्टेज है उसमें भी चेंजेस आएगा. आपने वो ओम्स लॉ में आप देख सकते हो. ओके, सो वो कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा और आपको डिस्प्ले करेगा. जब आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये स्टेडी रहता है, ना कंप्रेशन होगा ना टेंशन होगा. सो यहाँ पे आप आउटपुट जीरो मिलेगा. इफ यू आर गिविंग 5 वोल्ट, ऑल्सो वी आर here display 0 volts, and the weight will display 0. Okay, so this is the formula. v v0 equal to r3 by r3 plus r4 minus r2 by r1 plus r2. ओके, सो r3 by r3 plus r4. सो एक कंप्रेशन में एक टेंशन में उसका हम समेशन करते हैं, और उसमें से r2 डिवाइड बाय r1 plus r2, एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं. हमारा जो अप्लाई किया हुआ है वोल्टेज, वो नॉर्मली सभी जो सर्किट्स होते हैं उसमें हम 5 वोल्ट ही लोड सेल को हम इनपुट देते हैं. ओके, सो यहाँ से हम ये एंड पॉइंट्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं. ओके, so now we are understand what is load cell. Now there are different types of load cell, as we earlier seen in backfilling system, platform scales, in wave bridges. So this is our bending beam load cell. This is our single shear beam. This is our double ended shear beam. So इसमें दोनों साइड से आपका जो लोड सेल है वो फिक्स हो जाता है, और आपका वेट यहाँ से सेंटर से आता है. इसमें क्या होता है, यहाँ से आपका लोड सेल फिक्स हो जाता है और आपका जो फोर्स है वो यहाँ से आता है. इसमें भी सेम, यहाँ पे आपका लोड सेल फिक्स हो जाएगा और यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करोगे. ओके, दिस इज अवर कॉम्पैक्ट कंप्रेशन टाइप लोड सेल. सो ये एक बटन टाइप होता है जिसमें सेंटर में आपका लोड आता है. सेम ये आप कंप्रेशन टाइप लोड सेल है, इसमें भी सेम सेंटर में ही आता है. इसमें ये जो आप देख रहे हो ये राउंड, सो उसमें हमारा जो स्ट्रेन गेज होता है वो पेस्टेड होता है. ओके, और इसमें कंप्रेशन टाइप में हमारा जो स्ट्रेन गेज जो सर्किट होता है, व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट, वो यहाँ पे सेंटर में होता है. सो जैसे आप वेट अप्लाई करते हो, सो उसमें जो स्ट्रेन गेज है वो स्ट्रेन गेज आपका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू चेंज होगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा. सो ये बेंडिंग बीम है, जैसे मैंने बताया था आपको कि 20 केजी से लेके 200 केजी तक की वो यूज होते हैं. ये है हमारा सिंगल एंडेड शेयर बीम. ये 300 केजी से 5000 केजी तक के होते हैं. ये डबल एंडेड शेयर बीम, ये बहुत ही हैवी ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, जिसमें रिएक्टर बहुत ज्यादा आरपीएम पे आपका जब घूमता है, उसमें हम ये डबल एंडेड शेयर बीम यूज करते हैं. ये कंप्रेशन टाइप लोड सेल है, बड़े जो साइलोज होते हैं उसमें ये यूज होता है. ये कंप्रेशन टाइप जो आपका साइलोज है उसमें कुछ आपका सिर्फ स्टोरेज के लिए ही आप यूज कर रहे हो, तो उसमें हम
ये कॉम्पैक्ट कंप्रेशन टाइप लोड सेल यूज कर सकते हैं। ये हमारा पीसीबी टाइप लोड सेल है जो कि हम प्लेटफॉर्म स्केल में यूज करते हैं, जो हमने आगे देखा था। So these all are indicators and controllers. So what is indicator and what is controller? दोनों आपका वेट ही दिखाएगा। ओके, सो इंडिकेटर उसमें उसके जो नाम में ही उसका ये है मीनिंग है। सो इंडिकेटर इज नथिंग बट इट इज शोइंग अवर वेट। सो ये हमारा आईफा इंडिकेटर है जिसमें हम सिर्फ वेट डिस्प्ले करवा सकते हैं और इसमें ब्लूटूथ भी यूज होता है। सो आप मोबाइल से उसको टायर वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसको इंडिकेटर हम कहते हैं। दिस ऑल आर अवर कंट्रोलर्स। सो इसमें इनपुट और आउटपुट होता है। लाइक ये हमारा i20 है, ये i40 इंडिकेट कंट्रोलर है। सो उसमें दो इनपुट चार आउटपुट यूज होता है। सो वो आप कहीं पे भी यूज करके बैचिंग ऑपरेशंस करवा सकते हो। ये हमारा एडवांस कंट्रोलर है, जो कि बैक फिलिंग सिस्टम, ड्रम फिलिंग सिस्टम जिसमें ज़्यादा इनपुट और आउटपुट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये कंट्रोलर यूज होता है। सो आपका जैसा एप्लीकेशन होता है वैसे आप कंट्रोलर्स यूज करते हो। जो इसमें मेरे बहुत सारे जो मुझे इनपुट आउटपुट्स जो यूज करने हैं, तो मुझे पीएलसी साइड जाना पड़ेगा। ओके, दिस इज EXD एनक्लोजर। लाइक केमिकल प्लांट्स में ये जोन 1 जोन 2 में ये यूज होता है, जिसमें आप वोल्टेज या कुछ स्टैटिक चार्ज से भी आप आग लग सकती है, वहां पे ये यूज होता है। सो हमने अभी लोड सेल के बारे में सब देख लिया। नाउ वी ऑल आर अवेयर ऑफ लोड सेल, इंडिकेटर, कंट्रोलर्स एंड इट ऑपरेशन where it is using. Now, if we need fully automated system like हमने जैसे ड्रम फिलिंग सिस्टम देखा, सो उसमें पीएलसीज वगैरह यूज होता है। सो उस वो पूरा ऑटोमेशन में होता है जहाँ पे मैन पावर बहुत ही कम लगता है। So like basics of automation and its advantages. So as the name suggests, automation means to perform automatic operations by means of different kinds of machines. ओके, सो ऑटोमेशन में क्या होता है, बहुत सारे आपके जो इनपुट आउटपुट लाइक वाल है, पंप है, मोटर्स है, वो जो आउटपुट्स है उसको आप इसमें पीएलसी में कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे कि आपका स्विच है, बटन्स है, लाइक पुश बटन्स है, तो उससे आप इनपुट पीएलसी को दे सकते हो। सो आपने जैसे स्टार्ट इनपुट दिया, तो वो एक इनपुट हमारा पीएलसी को मिलता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है कि क्या स्टार्ट करना है हमें। सो वो आउटपुट जो जितने भी होते हैं हमारे, वो स्टार्ट करते हैं लाइक मोटर, और वो सब प्रोग्रामेबल होता है। सो वो सब सीक्वेंस में स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट हमें क्या स्टार्ट करना है, लाइक हमारा जो ड्रम फिलिंग सिस्टम है उसमें जैसे देखा हमने कि पहले लांस नीचे आएगा, फिर उसके बाद उसका लांस ओपन होगा, उसके बाद उसमें मटेरियल आएगा। सो जो बॉल वाल है वो ऑन होगा। सो लाइक हम प्रोग्राम करते हैं उसमें। सो सभी कुछ एक सीक्वेंस में आप करवा सकते हो पीएलसी से। सो टेक्निकल टर्म में देखें तो ऑटोमेशन इज बेसिकली द डेलीगेशन ऑफ ह्यूमन कंट्रोल फंक्शंस टू टेक्निकल इक्विपमेंट एम टुवर्ड्स अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी। लाइक पीएलसी से जो ऑटोमेटिक काम होगा तो वो आप 24 आवर्स से करवा सकते हो। केमिकल इंडस्ट्रीज में अभी ऑटोमेशन यूज होता है, तो वहां पे तीनों शिफ्ट में काम चलता है। ओके, सो उतना जो मैन पावर है वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना आपका मशीन्स ऑटोमेटिकली कर जाएगा। सो फॉर हायर प्रोडक्टिविटी वी आर यूजिंग ऑटोमेशन। फॉर if efficient uses of raw materials and energy, we are using this automation. सो जो आप कुछ एक एंड प्रोडक्ट बना रहे हो,
उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हो, सो उसका आप मैन्युअली करोगे तो उसमें फर्क पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली करोगे तो वो जितना आपको 400 का आपने सेट पॉइंट रखा है तो 400 kg उसमें वेट लेगा वो। सो आपका जो रॉ मटेरियल्स है वो बचता है उसमें। लाइक एनर्जी उसमें आपका मेन पावर जो है वो एनर्जी आपका उसमें बच जाएगा। फिर उसमें सेफ्टी से आप काम कर सकते हो, और एंड में आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। लाइक आप कभी भी कोई भी आपको हम जो भी बिस्किट वगैरह है, जो जो भी हम मार्केट में जो भी चीजें देखते हैं सब भी एक जैसे ही आपको मिलेगा, आपने 3 महीने पहले लिया हो या फिर अभी रिसेंटली लिया हो। सो उसमें एक बैच कोड होता है। सो वो बैचिंग वो स्टोर करके रखते हैं कि लाइक दिस इन दिस बैच वी हैड प्रोड्यूस tens of drums and many more बैग्स। सो आप सेम टाइप का आप मटेरियल जो है एंड प्रोडक्ट वो दे सकते हो। सो टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन जिसमें होम ऑटोमेशन। सो अभी आप मैन्युअली बटन ऑन करते हो और लाइट चालू होता है। सो अभी मोस्टली जगह पे होम ऑटोमेशन होता है। सो लाइक आप जैसे एंटर होते हो, सो जो सेंसर है वो सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली फैन ऑन कर देगा, एसी ऑन कर देगा, लाइट्स ऑन कर देगा। जैसे आप कहीं पे बाहर निकलते हो तो हमने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाते हैं जो सेंसर ऊपर लगा होता है उससे सेंस करके। सो ऑफिस में हम यूज करते हैं उसमें ऑटोमेशन, सेंट्रल एसी, प्रिंटर, स्कैनर, सीसीटीवी कैमरास उसमें। फिर बिल्डिंग ऑटोमेशन में हम लिफ्ट, स्मॉग डिटेक्टर्स। लाइक थोड़ा स्मॉग जो हुआ तो वो जो स्मॉग डिटेक्टर जो गैस डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट कर लेगा और आप अलार्म वो अलार्म जनरेट कर देगा। फिर साइंटिफिक ऑटोमेशन में हम यूज कर सकते हैं फॉर रॉकेट लॉन्चिंग। इंडस्ट्रीज में जैसे हमने बात किया ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड बॉटल फिलिंग, ऑटोमेटेड मिल्क फिलिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रग, टॉवेल्स, वेल्सपून का जो रग वगैरह आता है वो फुल्ली ऑटोमेटिकली वो बनता है। फिर सॉप्स वगैरह जो है, पाउडर्स है, फूड प्रोडक्ट्स है। इंडस्ट्री में जितना भी कुछ मैन्युफैक्चर होता है अभी बिग इंडस्ट्रीज में, सो वो सारा अभी ऑटोमेशन और स्काडा पे होता है। सो ऑटोमेशन हम पीएलसी से कर सकते हैं बिकॉज वी रिक्वायर्ड मैनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो दिस इज ओल्डर पीएलसी एंड दिस न्यू पीएलसी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वायर्स लगाते थे इनपुट्स साइड और आउटपुट साइड। इसमें एनालॉग का भी उसमें ही होता था। सो जैसे हम प्रोग्राम वगैरह जो हमें उसमें डाउनलोड या अपलोड करना है, सो यहाँ से हम कर सकते थे। लेकिन अभी एडवांस जो एलन ब्रिडली का जो पीएलसीज आ गया है उसमें आप इथरनेट थ्रू सब करवा सकते हो। इसमें ज्यादा आपका वायरिंग वगैरह नहीं होता है। सो आपका जो पैनल्स वगैरह है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो व्हाट इज पीएलसी? पीएलसी नथिंग बट प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। इट इज द मेन पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। पीएलसी के बिना आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। लाइक पहले करते थे रिलेज वगैरह यूज करके, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जब उसमें कुछ आपको फॉल्ट आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपका जो मेन स्क्रीन है कंप्यूटर पे, उसमें आपका जो कुछ इनपुट या आउटपुट खराब हुआ है वो आपका डिस्प्ले करवा देगा। सो आप बेटरली आइडेंटिफाई करके आपका जो सिस्टम है वो रनिंग में कर सकते हो। सो इसमें इनपुट्स हम यूज करते हैं लाइक स्विचेस, पुश बटन, सेंसर्स, वो उसका फीडबैक पीएलसी को देता है। आउटपुट्स में हम यूज करते हैं लैंप, मोटर, रिलेज, कॉइल, सोलेनॉइड वाल्व्स। स्क्रीन को डिस्प्ले करवाना है आपको या पंप चालू करना है, कंप्रेसर। सो जो आपको इनपुट्स जैसे जाते हैं और उससे आपको कुछ सीक्वेंस एग्जीक्यूट करवाना है तो वो आप पीएलसी से करवा सकते हो। सो पीएलसी में 3 टाइप से ऑपरेशंस होते हैं। पहला इनपुट इंटरफेस, सेकंड सीपीयू प्रोसेसिंग। लाइक जो इनपुट है आपका जो प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसर में जाएगा, उसके बाद वो एक स्टेटस टेबल बनाता है और वो आउटपुट को देता है कि अब हमें यहाँ का जो बाइनरी है वो 1 मिला है, सो हमें ये आउटपुट वो सिग्नल हमें स्टार्ट करना है। ओके। सो पहले देखते हैं इनपुट स्कैनिंग।
सो वो इनपुट जो टर्मिनल होता है उसको वन बाय वन स्कैन करता है। लाइक हमने जब ड्रम प्लेस किया था तो वहां पे हमारा सेंसर था, वो उसने सेंस किया, और जो उसका एक स्टेटस था वो जो प्रोसेसर है उसको उसने सेंड किया। सो लाइक जितने भी आपका पूरा फुल्ली ऑपरेशन में जितने भी आपके जो इनपुट्स है उसका जो स्टेटस है आपका वो वन होता है, तो वो सारा स्टेटस टेबल बनता है और वो आपका प्रोसेसर में जाएगा। प्रोसेसर में आपका जो मेनली प्रोग्राम आपने अपलोड किया हुआ होता है। सो प्रोग्राम में वो पहले रिसीव करेगा स्टेटस टेबल, देन वेरीफाई करेगा स्टेटस टेबल को और कंपेयर करेगा उसके जो मेमोरी में जो प्रोग्राम है उसमें, चेक करेगा कि यस इफ दिस इज द बाइनरी इज वन, देन वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस आउटपुट। सो लाइक वो कंपेयर करके डिसीजन लेता है कि हमें कौन सा आउटपुट हमें स्टार्ट करना करना है। नाउ आउटपुट स्कैनिंग में क्या होता है, उल्टा होता है। इनपुट स्कैनिंग में जो होता है हम सेंस करके उसके बाद स्टेटस टेबल देते थे। इसमें ये प्रोग्राम स्कैनिंग से जो स्टेटस टेबल है वो लेके फिर आउटपुट जो आपके होते हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो डिजिटल कम्युनिकेशंस में हमने देखा होगा बिट्स पे काम करता है, 0 एंड 1, उसके बाइट्स बनते हैं, बाइट्स के बाद आपका वर्ड, और वो जो पूरा स्टेटस होता है वो पूरा आपका पीएलसी को जाएगा, और उसके बाद जैसे प्रोग्राम होगा ये विद इन सेकंड्स सारा ऑपरेशन होता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हो रहा है वो। सो ये हमारा एचएमआई है, पीएलसी, वीएफडी, इंडक्शन मोटर। सो मुझे कोई सिग्नल मिला है, उससे मुझे जो इंडक्शन मोटर है उसको स्टार्ट करना है, और वो भी वीएफडी जो है मेरा जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, वहां से हम इसका जो स्पीड है मोटर का वो हम सेट कर सकते हैं। सो इसमें मैंने 50 हर्ट्ज जो सेट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी। सो जो पीएलसी है वो 50 हर्ट्ज से ही आपका जो मोटर है वो स्टार्ट करेगा। और एचएमआई हम टच स्क्रीन होता है, उसमें आप स्काडा डिस्प्ले करवा सकते हो, और वहां से आप इनपुट और आउटपुट टच से ऑन करवा सकते हो, लाइक अवर मोबाइल्स। ओके, दिस ऑल अबाउट ऑटोमेशन एंड अवर लोड सेल। थैंक यू। Thank you. Thank you very much for your wonderful session. You nicely covered the all the important topic related to automation as well as the load cell. Okay. Thank you very ओके, much. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर अटेंशन। Thank you. Hello. Hello, sir.